Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor here at Mentor's Galaxy. आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ये सिलेबस मैंने आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है and I have divided the syllabus into subsections and topics so that it is easy for you to understand about the chapters that we are going to study in our upcoming days Mentor's Galaxy. So let us begin today's discussion on the class 11 chemistry syllabus. तो पहले हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। उनमें से the first 3 sections are most important. Firstly, we have the section of physical chemistry where we have to study 6 chapters, followed by inorganic chemistry where we have to study 2 chapters, and organic chemistry where we have to study 3 chapters. In our competitive exams, we have an additional topic of the concepts of practical chemistry, which I will also discuss with you. Apart from that, if we add all this, we will see कि class 11 के लिए हमको total study करने होंगे 11 chapters, 6 from physical chemistry, 2 from inorganic chemistry, and 3 from organic chemistry. So let us see what chapters we have to study in each section. I have listed the 6 chapters that are there in your syllabus of class 11 for chemistry. Starting with some basic concepts in chemistry, atomic structure, chemical bonding and molecular structure, chemical thermodynamics, equilibrium and redox reactions. तो ये 6 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो कि हमें स्टडी करना है फॉर क्लास 11. Moving on to inorganic chemistry, as I had mentioned, there are 2 chapters, which is classification of elements and periodicity in properties and P block elements. Now the thing about P block elements, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, but it is very much included for your competitive exams. So we will study this chapter as well because it is very important for your competitive exams. For organic chemistry, as I had mentioned, we have 3 chapters, which is purification and characterization of organic compounds, some basic principles of organic chemistry and hydrocarbons. So ये है हमारे 11 chapters which we have to study for our class 11 syllabus. Now I will discuss the topics that are present in each chapter which we are going to study. Starting with physical chemistry. The first chapter of physical chemistry is basic concepts in chemistry. This is a very basic chapter and इस chapter से आपको concept building के लिए मदद मिलेगी. And based on this chapter, we will proceed to the other chapters and the concepts that we will learn in this chapter will be very useful in all the upcoming chapters of chemistry. तो इस chapter को आप अपना base भी मान सकते हैं for the concept of chemistry in the upcoming sessions. So let's see what topics we have to study. This is a recap topic which we have studied in our previous classes, matter and classification. Next, related to that, we have physical quantities, unke measurements, and the concept uncertainty. Then we have the most important and the first relevant atomic theory, which is Dalton's atomic theory. फिर आता है laws of chemical combinations. Concept of masses and mole concept, very, very important. Empirical and molecular formula and stoichiometry, again, very, very important. Because यहाँ से बहुत सारे questions आते हैं both in your school exams and your competitive exams. So these topics are very important from this chapter. And lastly, chemical equations. Most importantly, हर chapter के end में we will have a special session to solve problems, जिसको हम कहेंगे practice problems and obviously previous year questions of JEE. तो वहां से हमको एक पैटर्न भी समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे टाइम में कुछ ट्रिक्स होते हैं कि नहीं. सो दिस आई विल आल्सो डिस्कस विथ यू. Moving on to our next chapter, which is atomic structure. This is also a very basic chapter, basic in the sense for your concept building.
इट इज अ फेयरली न्यू चैप्टर जो कि हमने इसके पहले कभी स्टडी नहीं किया है. बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, बट डू नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल देम टू यू. Starting, we will discuss what is electromagnetic radiation and the famous photoelectric effect. Discovery of protons, neutrons and electrons, the subatomic particles. Thomson's model and Rutherford's model, ये भी हम discuss करेंगे. Then the very important hydrogen atom and the Bohr's model related to the hydrogen atom. Basic concepts of quantum mechanics. It is a very interesting topic and can be confusing, but I will try to explain it to you with fun and interesting modules. फिर आता है क्वांटम नंबर्स एंड द सिग्निफिकेंस, कि कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं, हम उनको क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं केमिस्ट्री में. फिर आता है एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स. इसके पहले वी हैव हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, लेकिन ये ऑर्बिटल्स इज समथिंग दैट वी हैव नेवर स्टडीड बिफोर. सो दिस इज अ वेरी न्यू एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. Rules for filling electrons in orbitals. This we will also study, and finally we will have our practice problems and previous year JEE questions. So this is all about atomic structure. This is a rough overview of the topics that we are going to study in this chapter. Next आता है हमारा chemical bonding and molecular structure. This is also a very new and a very interesting topic. तो हमारे जो compounds होते हैं, तो एलिमेंट्स एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं, तो वो कैसे बॉन्ड्स होते हैं, कैसे टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, दिस वी विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड पैरामीटर्स. देन वी हैव कोसेल-लुईस अप्रोच टू बॉन्ड फॉर्मेशन, concepts of ionic bonding and covalent bonding, valence bond theory, molecular orbital theory. फिलहाल ये सब आपको बस नाम लग रहे होंगे, बट व्हेन वी विल स्टडी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दीज कॉन्सेप्ट्स आर अबाउट एंड आई विल एक्सप्लेन देम टू यू. And we will also study about the basic idea of metallic bonding and hydrogen bonding. And obviously we will have practice problems and JEE previous year's questions. The next topic is thermodynamics. ये एक ऐसा शब्द है which I don't think you have heard before. Thermodynamics is basically the study of heat and work and their relations and energy. मतलब heat, work और energy कैसे आपस में related है. The study of that is called thermodynamics. तो इस chapter में we will obviously study the fundamentals of thermodynamics because this is a very new chapter. ये नाम भी हमने पहले नहीं सुना है, so हम एकदम fundamentals से ही start करेंगे. Properties and processes of thermodynamics, कि कैसे processes रहते हैं, कौन से properties रहते हैं. कुछ laws होते हैं thermodynamics के. We will study the first law. Related to that we have the Hess's law. Enthalpy के बारे में हम पढ़ेंगे of various chemical processes. We will study about the second law of thermodynamics, and we will have a brief introduction to the concept of the third law of thermodynamics. And obviously, we will have practice problems and JEE previous year questions. This is a very important chapter. इसमें से बहुत सारे numericals आते हैं, and we will practice and see how to solve those numericals. The next chapter is equilibrium. ये इक्विलिब्रियम वर्ड शायद थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस, बैकवर्ड रिएक्शंस. कौन से पैरामीटर्स फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करते हैं, कौन से पैरामीटर्स बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करते हैं, यही सब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखेंगे. सो फर्स्टली वी विल डेफिनेटली स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कि ये होता क्या है. देन इक्विलिब्रिया ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल प्रोसेसेस वी विल स्टडी. Le Chatelier's principle, it is a very very important topic for your concept building कि कौन से ऐसे factors होते हैं जो हमारे equilibrium को control करती है. Then we will have ionic equilibrium, acid base equilibria. Related to acid base हमारे पास आता है concept of pH, solubility products and buffer solutions. This is also a very important topic and a very interesting one क्योंकि पहले हमने ऐसी कोई टॉपिक डील नहीं की थी. And definitely we will have practice problems for you to solve and we will solve JEE previous year questions. The last chapter for physical chemistry is redox reactions.
रिएक्शंस हम बैलेंस कर चुके हैं इसके पहले, बट रिडॉक्स रिएक्शंस आर समथिंग डिफरेंट. वो हमारे नॉर्मल हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस चैप्टर वी विल सी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होता है, दिस वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. We will study about oxidation numbers, very important, and the methods of balancing the redox reactions. कि redox reactions को हम balance करेंगे कैसे, कि क्या rules होते हैं उनको balance करने के लिए. We will study in this chapter. And finally, applications of redox reactions. कि what is the use, what is the application of such reactions. And we will have practice problems and JEE previous year questions. अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अनलाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वी विल स्टडी देम थॉरोली. द फर्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो दिस इज अ वेरी नोन टॉपिक. दिस इज अबाउट आवर पीरियोडिक टेबल, जिसके ऊपर हमारी पूरी केमिस्ट्री, सारे एलिमेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज बेस्ड है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So we will study about the periodic laws and the modern periodic table. Modern periodic table के आने से पहले जो laws थे, उनकी importance, उनके drawbacks we will discuss. We will talk about the S, P, D and F block elements. If you see a picture of the periodic table, you will see कि there are categorized elements. कुछ elements को हम S block elements बोलते हैं, कुछ को हम P block elements बोलते हैं, and D and F block, and we will study which elements fall in which category. हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स, कैसे प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इनका कैसा ट्रेंड रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल. वी विल स्टडी. नेक्स्ट वी विल स्टडी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी and nomenclature of elements with high atomic numbers. High atomic numbers बोले तो हमारा atomic numbers which are greater than 100. तो उन elements को हम कैसे naming करते हैं वो भी हम इस chapter में देखेंगे. And we will definitely have again practice problems and previous year questions from JEE. The next topic, this topic is not included for your class 11 school exams in NCERT, but it is very much there for your competitive exams. इस chapter को भी हम काफी focus देंगे. This is specifically about the P block elements. मैंने जैसे last chapter में हमने देखा कि there are different blocks of elements in a periodic table, S block, P block, D block and F block. This is specifically about the P block elements. We will obviously study the introduction कि कौन से elements को हम exactly P block elements कहते हैं. We will study the electronic configurations, their trends in physical and chemical properties, कि कैसा trend रहता है उनका each group में, and unique behavior of certain elements. उसी block में कुछ elements का थोड़ा सा different behavior रहता है, and we will study them, जिसको हम exceptions बोल सकते हैं, the famous term of inorganic chemistry, exceptions. And obviously we will practice problems and have previous year questions. Moving to organic chemistry, we have 3 chapters. So let's see what we have to study in those chapters. The first chapter is purification and characterization of organic compounds. So organic compounds को कैसे different methods से हम purify कर सकते हैं, we will study that. We will study how to analyze a compound both qualitatively and quantitatively. Qualitatively मतलब उस compound में कैसे atoms है, कैसी उसकी quality है, that, and quantitative analysis means कि एक compound में कितना उनका quantity है, that we will study. Calculations and empirical formulas and molecular formulas. Organic compounds के empirical and molecular formula कैसे निकालते हैं, उसके क्या कैसे calculations रहते हैं, that we will study. And there are some numerical problems on quantitative analysis that we will also study. And again, we will have practice problems and JEE previous year questions. Moving on, this is some basic principles of organic chemistry. इसके पहले whatever organic chemistry we have studied, we will recap those and we will build on more advanced topics in this chapter.
तो पहले ही हम बात करेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी के ऊपर कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है. So we will study that, the tetravalency and shapes of simple molecules, hybridization of organic compounds, कि कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. अगर OH ग्रुप होगा तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे, COOH ग्रुप होगा तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे. ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस में कैसे हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो हम पढ़ेंगे. Homologous series and isomerism, nomenclature, which is the naming of the organic compounds, electron displacement in covalent bonds, and some common types of organic reactions. We will definitely have practice problems and we will see at the previous year's questions from JEE. The last topic of class 11 and of organic chemistry is hydrocarbons. इसका भी एक idea था हमारे class 10 तक, but now we will study it in a more advanced form. So let's see, we will study the classification, isomerism, nomenclature and reactions of alkanes, which is carbon-carbon single bond. The same for alkenes, which is carbon-carbon double bond. And the same for alkynes, which is carbon-carbon triple bond. And lastly, aromatic hydrocarbons. मतलब जो हमारे रिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे फेमस रिंग सिस्टम इन केमिस्ट्री इज बेंजीन, वैसे ही एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, we will study its classification, isomerism, nomenclature and the reactions. और हम एक बहुत फेमस एंड बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी देखेंगे इसमें, which is Friedel-Crafts reaction and the influence of functional group in benzene ring. कि benzene ring में अगर हम functional group डालेंगे तो कैसा इफेक्ट रहेगा उसके ऊपर, we will study. And definitely again we will have practice problems and JEE previous year questions. So this was our entire chemistry syllabus for class 11. एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था उसका भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको. ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आई विल डिस्कस देम विथ यू. देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स है इसमें. We have detection of functional groups in organic compounds, chemistry involved in preparation of compounds, chemistry of titrimetric experiments. टाइट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लैब में करेंगे एंड उसके पीछे का जो प्रिंसिपल रहता है वो मैं आपको बताऊंगी. क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट and some other chemical principles we will discuss. So this is what we will discuss regarding to the practical chemistry. But apart from that, जो 11 chapters मैंने आपको बताए वो बहुत ही important है. सबसे हमेशा questions आते हैं आपके स्कूल में and in competitive exams, and we will dive deep into the conceptual learning and also we will learn how to solve the questions. So this was all about my discussion on the class 11 chemistry syllabus. I hope this video has been informative for you. At Mentor's Galaxy, we will provide you with regular classes and also we will keep you engaged on other social media platforms with our shorts and reels. And most importantly, we will have problem solving sessions separately. I would like to request you all कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Instagram पेज को फॉलो कीजिए एंड हमारे वेबसाइट को भी विजिट कीजिए फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि क्लास 11 के लिए हम कौन से चैप्टर्स को टारगेट कर रहे हैं एंड कौन से चैप्टर्स को हम कितनी डेप्थ में स्टडी करेंगे. इस वीडियो में मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है विच इज द नंबर ऑफ लेक्चर्स फॉर ईच टॉपिक एंड उसका रीजन यही है कि आई डोंट वांट टू पुट अ नंबर, आई वांट टू explain you the concepts properly and so we will see how many lectures it takes to understand each topic. I will try to be precise and make like comprehensive videos for you ताकि आपको समझने में सब कुछ easy हो. But ऐसा मैं नहीं करूंगी कि जल्दबाजी में कोई टॉपिक में छोड़ दूं या ऐसा नहीं होगा. So I will try to include as many lectures as possible, but I will try to keep them fun and interesting ताकि आपको भी स्टडी करने में अच्छा लगे. I hope you will follow us on our Instagram page and subscribe to our YouTube channel. Please visit our website for more updates.
And for the next video, I will come up with the class 12 chemistry syllabus discussion. So stay tuned for that. Thank you.